Likewise, I can share my screen and everything. Yes, yes, yes. Whichever suits you, you can Okay, share and demonstrate. fair enough. Fair enough. Yeah, great. So you can start whenever you are ready, sir. Yes, yes, yes. I just request you to please. So, first of all, a very, very pleasant morning to one and all present here. So, हम Sorry लोग to interrupt you. I'll just leave the meeting and you can just complete the recording and end the session whenever you are done. surely, perfectly fine, no problem. Thank you. Great. So, a very, very warm and pleasant morning to one and all. So, it's indeed a great pleasure for me to be hosting you all for this very, very new world, the phenomenal world of AI. सो हम काफी ऑफन सुनते हैं, हमारे क्लाइंट्स आते हैं और आके हमसे कहते हैं दैट सर, आई एम नॉट दैट फॉर्चुनेट इनफ कि हमने 2020 में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता। हम इतने फॉर्चुनेट इनफ नहीं है कि 2010 में 2005 में वी वुड हैव इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, द काइंड, द वे इन विच share market has grown and the kind of profits people are making, those who have invested in 2020. Likewise, those who have invested in immovable property before and the kind of impeccable growth, exponential growth they are facing, you know, is like phenomenal. So everyone is regretting. But with this thought, I want to tell you, all of you, all the 80 participants, those who have decided to join for AICA course, is the one of the best steps which you have taken. So very soon you will be seeing in 2026, just after a year, people invested in share market have regretted after 4 or 5 years. But the people, those who are not investing in AI, it means those who are not trying to understand, not trying to learn this phenomenal change that is AI, will regret not after 5 years, just 6 months down the line or just a year down the line. So um, so I should say that since you all have joined this AICA course, it means that half journey you have already completed. The kind of changes you will see after completion of this course will be impeccable, I should say. So there is one saying I was just reading in today morning's newspaper. It was saying that uh, they are. So before this, I just wanted to mention I really want, I really want that this session should be purely interactive. I'm not the only person who will be going to speak. I really want that everybody should participate. Whatever topics we are covering today in today's session. So anyone who is willing to interrupt in between, they can raise their hands. I really want that this session should be purely interactive. So considering this AI being very new field, different field, so everybody is new in this. So I really think that the kind of crowd which I can imagine in this session, there are people who have recently been qualified as a chartered accountants recently, I mean in the last batch, and there are chartered accountants who are very senior. Even I can find people from age 65, 70, and I can even find people who are of age 25. So there is huge gap between. So what I'll try to do is I'll try to keep this session very interactive. Again, I'll request that whatever doubts you have, you can interrupt in between. It will really helpful not only for you, but for everybody who is listening to this session. Like all the 80 participants will really be benefited if in case you are raising any doubt. So I will stop in between. One more very important thing, I can find people from South, I can find people from Mumbai, I can see people those who are from Delhi. So it means there's a lot of variation
I mean, geographical variation is there. So maybe some people have concern with the language. The language can be a barrier. So I can even be I can even continue this session in English or in Hindi, whatever you like. So people can comment. It's just that the kind of information I see AI in the form of AICA want to deliver to all the participants, those who have got this opportunity to be the part of this batch should, be benefited. So let me share my screen. And till now, if anything is there, everyone can come up. Let me share my screen. So hope everybody can see this presentation. So once again, I welcome everyone. So let's start with today's session. And the only objective is to empower all the chartered accountants, being from the range of 21, 22 years of age to 75, 80, 85 years of age with AI skills. That's artificial intelligence skills. So I was just mentioning, I just added this slide in my presentation today morning itself. I just read this in the newspaper. There are decades where nothing happens. ऐसे 10 वर्ष निकल जाते हैं जब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. और there are weeks, ऐसे सप्ताह भी होते हैं where decades happens. There are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen. मतलब एक हफ्ते में मतलब एक हफ्ते में जो 10 सालों में चीजें होती हैं वो हो जाती हैं. ऐसा क्यों कहा मैंने आखिर? मैं एक उदाहरण से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं. आज हम लोग देखते हैं कि इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स, टॉकिंग अबाउट maybe Instagram, talking about maybe some other OTT platforms, AI platforms, and different things. So if we take the statistics that how much time uh, this Netflix took to be with in the club of 1 million subscriber, that was 3.5 years. But if I compare this thing with chat gpt, it took just 4 5 days. That means less than a week to have 1 million subscribers. So you can imagine the phenomenal power that is there in this AI thing. So I should say that you all are among that lucky crowd, and your life will actually be transformed just after this 3 days course. With this thought, let me introduce myself. I am Dr. Priyesh Kumar Jain, a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. And I started my career with forensic practice of KPMG, and I even served in the forensic practice of Ernst & Young. And since I qualified way back in 2008, and since then, after being into the big fours, forensic practice, I was fortunate enough to be the part of investigation team of Satyam Scam. After that, I moved to my hometown, that is Madhya Pradesh, started my practice. So I am into the glorious profession since last 17 years.
Along with this, I am operating a KPO, that's Knowledge Process Outsourcing Unit, in central part of India, that is Sagar, and doing a lot of data entry, international accounting things. Apart from this, the way I mentioned in my profile that I am, you know, a, a AI enthusiast. Apart from this, I did my doctorate, that is PhD in forensic accounting. So with this introduction, let me move to our today's topic. So this journey of AICA will actually be like very phenomenal for you all. So in this journey, what objective ICI has placed is we will be covering a lot of you all might have covered already regarding AI basic concept. You might have been very well versed with the AI thing. So the we will also be focusing on the neural language processing in finance and audits, machine learning basics we will be seeing, and the next will be the data analytics tools and hands-on with this data analytics tools we will be seeing. We will be doing a lot of this case tools we will be going through. Apart from this, how AI projects can be implemented in the finance field, and last but not the least, the ethical concerns. Institute of Chartered Accountants of India is always very, very proactive towards the ethical concerns. Maybe that is in relation to the data security, maybe in if that is in relation to be like very skeptic in our audit and any other domain in which we are working. So uh, moving ahead to this topic, my this is my first question to you all. Where all these things, where this AI thing will lead the world? This is the very basic question which I'm asking you all. Everybody should participate. We have this chat window available. So I just wanted to know, even if someone is willing to speak, they can raise their hands. I will unmute them and then they can contribute in this. I really want that this session should really, really be interactive one. So I just wanted to ask you where this AI will lead to the world. So basically, if I talk about, uh, can we say that this after introduction of AI, the business is changing, the products are changing, the services are changing, the environment is changing, nothing is changing. We used to procure goods at the time in the ancient time at the barter system, but still we procure goods. Commerce is there, but the phenomenal change which took place is the e-commerce. So I should say that AI is actually leading the world into very, very different environment. The only thing which is changing, it should be quoted. That is, the only thing which is changing is the way business is being done. हम काम को कैसे कर रहे हैं, हम अपने बिजनेसेस को कैसे कर रहे हैं, सिर्फ यही है जो कि चेंज हो रहा है. हम लोग मोबाइल खरीदते थे 10 years पहले भी खरीदते थे, हम आज भी खरीदते हैं. 10 years पहले हम खरीदते थे शॉप्स में जाके 15 years पहले, बट अभी वी वेट for the global festivals to happen so that best of the best discounts we can get. If we talk about the food industry, the food and beverages industry, so what used to happen is पहले हम रेस्टोरेंट्स के पास जाते थे, but due to introduction of this platforms like Swiggy, Zomato, and such other platforms, restaurants are coming to us. ये कैसे हो रहा है, ये इतना बड़ा phenomenal change, how this kind of change is appearing. So we need not to go to restaurant anymore. We can be at home and enjoy the food of 10 different places with stringent timeline. And at that specific time, we can track where is the delivery boy. And even if there are certain changes, instructions, or anything, that can even be given at the real time. How come these things are possible? ये पहले सपने लगते थे, but these are reality now. Moving ahead, we should take one more example. I have lot and lot to cover in theory as well, but आप लोग बताइए, आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को ज्यादा थियरी पसंद होगी या प्रैक्टिकल? सी आई एम बाउंड विद द आईसीआई गाइडलाइंस, so I will have to cover lot of theoretical aspects. Lot of theoretical aspects I'll have to cover, but um, in addition to this,
मैं कोशिश करूंगा ये सेशन बहुत थियोरिटिकल के साथ साथ बहुत सारा प्रैक्टिकल हो। हम लोग बहुत सारी यूज केसेस डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को बड़े मजे की बात बताता हूं आज। हम लोग 5 मिनट्स में, मार्क माई वर्ड्स, 5 मिनट्स में टुडे वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको कोडिंग आती है? कितने लोगों को पाइथन आता है, सी प्लस प्लस आता है, जावा आता है? कौन लोग कोडिंग कर पाते हैं? I can find many. No, no, no. Out of 80 people, no one has raised their hands. I should say that chartered accountants, are very, very strong. CA fraternity is very strong in technical things. आप हम CA fraternity से कुछ भी पूछ लीजिए regarding technical. Ask in talk to us in sections. Talk to us in IFRS. Talk to us in relation to accounting standards. Talk to us in auditing standards thing. But the only two things which which I think we have to. So, due to this phenomenal change that is AI, we need not to learn any language. We need not to learn any coding. It's the natural language which can be processed. Wait for a while. These natural language, neural networks, these blah blah blah. All the technical things we will be covering in very very in-depth way. So I was there on this um, the way business is being done is changing. So I gave you the initial example of procurement of mobile. I gave you the example of restaurants, that is Swiggy, Zomato and all. Next is talk about the taxi business. How come they have grown so phenomenally well? Just imagine, koi organization hai like Ola, Uber, they don't even own a single vehicle. एक भी गाड़ी वो लोग ओन नहीं करते। उनके बैलेंस शीट्स हम लोग जब रिव्यू करते हैं, दे डोंट हैव इवन अ सिंगल कार, मूविंग व्हीकल, एनी अदर थिंग, दे डोंट ओन एनीथिंग, बट दे आर कंप्लीटली ड्राइविंग द मार्केट। और वो भी कैसे हो रहा है, इतना जबरदस्त। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को इसके बीच में बताता हूं। आप लोग, एक एग्जाम्पल है, आप लोग एक बार इसको कोशिश करिएगा समझने का। फर्स्ट थिंग इज, यू नो आज हमारे फोन में, इफ द बैटरी इज लोअर देन 10% एंड यू ट्राई टू बुक अ कैब, if the battery is greater than 50%, then you try to book a cab for the same distance, the rates which it will quote will be very very different. 20 to 30% hike will be there if the battery is lower than 10%. How come this is happening? Is there any human intervention in that? The answer is no. We are tracking the delivery boy live. Where is he? Is there a human intervention in that? The answer is no. All these things are going on because of a single thing, and that is artificial intelligence. Likewise, let me divert this topic towards the CA fraternity या CA profession thing. आप लोग याद करिए, एक समय था जब we have people from like 70, 75, 80 years of age as well and 60 years of age as well. They will be able to relate it in a more proper, better manner. They will be able to relate. एक समय था जब कैलकुलेटर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उस समय लोगों का कहना था कि नहीं जी, कैलकुलेटर का उपयोग ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। जी भाई, क्यों नहीं होना चाहिए कैलकुलेटर्स का उपयोग? व्हाई शुड वी नॉट यूज द कैलकुलेटर? दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। उस समय ये कहा जाता था, अगर हम कैलकुलेटर्स का बहुत एक्सेसिव उपयोग करते हैं तो परेशानी हम सबको फेस करनी पड़ेगी। व्हाट परेशानी वी विल फेस? जो प्रैक्टिस है टू काउंट, टू इवैल्यूएट थिंग्स, हाथ से ही कैलकुलेट करने की चीजों को जो हम कर लेते थे, वो हम भूल जाएंगे। बट स्टिल, डू यू थिंक दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी व्हेन पीपल हैड was able to stop the calculators to come in the market? The answer is no. ये इस तरीके का माइंडसेट कैलकुलेटर्स को मार्केट में आने से नहीं रोक पाया, एंड दे बिकेम वेरी प्रोमिनेंट। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों से पूछता हूं इन द सिमिलर फैशन। नाउ, how many of you are using office management software? See, before moving ahead in this office management software thing, I should say that why institute is more and more focused to train the members towards AI. The reason is, हम चाहते हैं इंस्टीट्यूट
का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड इंप्रूव। इसी सिमिलर बहुत सारा टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास अवेलेबल हो, मे बी टू मल्टीप्लाई द ग्रोथ, multiply with their efficiency with 10x. Maybe some people might be with this objective, they must be more inclined towards giving that spare time to their family. We all chartered accountants are so much busy. So this is the reason why where AI is really important. So coming back to the calculator thing, I said that कोई भी मार्केट में रोक नहीं पाया। इसी 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 सिमिलर लाइंस पे मैं आप लोगों को एक और उदाहरण देता हूं। आप बताइए, आज हम लोग फेसलेस असेसमेंट्स को कितना प्रोमिनेंटली हम लोग डील करते हैं। आप लोगों से पूछता हूं, कितने आउट ऑफ यू 80 पीपल, टेल मी हाउ मेनी पीपल आर देयर दोज हु आर इनटू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस? Okay, got it. There are approximately like 60% people those who are into traditional practice. I should say that this AI will change your mindset, will change the way you work. So I was giving you the example of faceless assessment. आप बताइए, फेसलेस असेसमेंट में कितने स्टेक होल्डर्स हैं? मतलब स्टेक होल्डर्स का मतलब कितने लोगों को असेसमेंट्स जो है इनकम टैक्स असेसमेंट, कौन कौन सी पार्टीज हैं जिनको इंपैक्ट करता है? द ऑब्वियसली द फर्स्ट पार्टी इज द एसएससी, जिस पैन नंबर पे नोटिस हमें रिसीव हुआ है, दैट इज द फर्स्ट पार्टी. सेकेंड पार्टी इज ऑब्वियसली द डिपार्टमेंट, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. दिस इज द सेकेंड स्टेक होल्डर. तीसरा स्टेक होल्डर है कौन? हम, we, the consultants, the chartered accountants, who are the bridge between the department and the SSC. आप बताइए, इन तीनों स्टेक होल्डर्स में से, तीनों स्टेक होल्डर्स का मतलब है एसएससी, डिपार्टमेंट एंड कंसल्टेंट, इन तीनों स्टेक होल्डर्स में से कौन सा ऐसा स्टेक होल्डर है जो चाहता है कि फेसलेस असेसमेंट्स हों? नंबर वन, डिपार्टमेंट. क्या डिपार्टमेंट चाहता है कि फेसलेस असेसमेंट्स हो? सी, एवरीबॉडी इज गिविंग द स्माइलीज on this portal, so I can understand. No, even I have never met any income tax officer who is of the view that faceless assessment should be there. Likewise, if we talk about the SSC, do you think that the SSC thinks that everything should be faceless assessment should be done, everything should be AI driven, the cases should be selected by the AI, the background data analytics team of the income tax department, who is using this income tax returns data as the base to analyze and shoot the notices? So it means that department is not willing, number one, for the faceless. Secondly, SSC is not willing. Third, we. Keep the hand on your heart and just imagine, do you think that the faceless assessment should be there? The answer is no. The reason is no one is willing, but still that is being implemented. So imagine about the calculator example, imagine about this faceless, this thing. So when nobody is willing to incorporate this faceless assessment thing, but still that is being implemented, it means what? We cannot stop the growth to happen. We cannot stop the kind of environment, phenomenal change which is being taking place. We cannot stop that. So कोई चाहता नहीं है पर कोई रोक भी नहीं पाया. इसका मतलब ये है that this is the right time for us to understand, to have hands-on experience, to be the part of this AI world. इसमें मैं एक फर्दर आपको दो एग्जांपल्स देता हूं रिगार्डिंग प्रेपरेशन ऑफ कंप्यूटेशन. और डोंट गो फॉर कंप्यूटेशन थिंग, और माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC. आई कैन चैलेंज दैट the way the softwares, the income tax softwares, the portals which we use for filing the income tax returns, the kind of speed and accuracy they have in calculation of interest under section 234 ABC is remarkable. But if we will sit and do that calculation, it will take lot of time. So that is the only objective. We need to utilize our time in the best possible manner and improve our efficiency.
एक और इसी 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 वे में मैं एक और आप लोगों को एग्जांपल देने का कोशिश करता हूं. आप लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आई रियली फाइंड दैट पीपल आर सम आई कैन सी दैट ओनली फ्यू पीपल आर पार्टिसिपेटिंग. आई वुड रिक्वेस्ट दैट द पीपल those who have not participated till now, they should raise their hands, they should ask the questions. चलो, मैं जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है इन दिस, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. आप लोगों को मैं दो ऑप्शंस देता हूं. आप लोगों को मुंबई से गोवा जाना है, ठीक है? मुंबई से गोवा जाना है आप लोगों को, और दिस विल बी अ रोड ट्रिप, अ ब्यूटीफुल रोड ट्रिप. इमेजिन जो हम दिल चाहता है मूवी में जो रोड ट्रिप था, वैसा कुछ रोड ट्रिप आपका होने वाला है. ऐसा इमेजिन कर लो आप लोग, ठीक है? So I am giving these examples because very soon we are heading towards the theoretical thing. I'm bound, so मुझे theory भी बहुत सारा cover करना है, but we will keep this session to be very interactive and very very practical. बहुत जबरदस्त चीजें आज हम लोग कवर करने वाले हैं, और आफ्टर दिस एआई कोर्स आप लोगों की लाइफ बदलने वाली है. दिस इज फॉर श्योर. तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया. आप लोग बताइए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आप जा रहे हो मुंबई से गोवा, वो भी रोड ट्रिप है. आपको मैं दो ऑप्शंस देता हूँ. That I'll give you a Mercedes car, a chauffeur driven Mercedes car you will have. ठीक है? This is the first option. That will pick you up from your home and drop you in the resort in the Goa. ठीक है? दूसरा ऑप्शन है, आपको मैं एक AI ड्रिवन कार देता हूं. AI ड्रिवन कार. AI ड्रिवन कार मींस अ ड्राइवरलेस कार, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा. बताइए, जस्ट रेज योर हैंड्स. So you have 30 seconds of your time. I'm just waiting. Everybody should wait. You'll go with option A or you will go with option B. A, B, A. It means that 99% of people are saying that they will go in Mercedes, and that will not be a driverless, that will be a chauffeur driven car. Oh great. अच्छा, अब मैं यहाँ कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को चेंज करता हूँ. ओके, मैं 3 months का स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को शेयर करता हूं. दिस स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू हाइपोथेटिकल स्टैटिस्टिक्स. जस्ट फॉर दिस एग्जांपल, मैं एक स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को शेयर करता हूं, एंड दैट स्टैटिस्टिक्स इज, पिछले 3 months में अगर मुंबई टू गोवा रोड ट्रिप में 100 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 100 इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें से 93 इंसिडेंट्स जो हैं, आई मीन 93 एक्सीडेंट्स जो हैं, वो शॉफर ड्रिवन कार से हुए हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन था. ठीक है? और रिमेनिंग 7 एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, वो ड्राइवरलेस कार, दैट इज एआई ड्रिवन कार के हुए हैं. और उसमें भी एक फ्लिक्स डालता हूं, दैट जो 7 एक्सीडेंट्स हुए हैं, विच आर 7 एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, विच आर through driverless car, that is not because of the गलती of AI, that's because of सामने वाली गाड़ी जो ह्यूमन ड्रिवन थी, उसने आके गाड़ी को हिट किया. सो आई कैन से दैट chauffeur driven car is prone to accidents in 100% manner, but the car which is AI driven, that is the driverless car, is almost close to less than 1% accidents. Now again, I'm giving you 30 seconds time. Start voting. A, again, chauffeur driven car. B, AI driven car. B. Everybody is now voting towards B. So here I'll make a statement that data analytics actually changes the perception. Because of data analytics, the perception of person changes. It means that all out of these 80 participants, everybody is willing to go in the driverless AI driven car. So what point I am trying to make here is that after joining this AICA course, you will get to know the data analytics of the AI world. Data analytics of AI world, which will actually change your perception. Now you can see on the screen that the way AI is changing the market circumstances, market scenario. See, AI is actually AI jobs
are actually the market explosion. They are creating the explosion in the market. Why? Because there is very, very huge and high demand of uh, AI professionals in India. What is the meaning of AI professionals? When we are saying that AI, artificial intelligence, can do everything by its own, so people say that, will the AI replace the human being? Will the AI replace the chartered accountants? Will the AI replace the professionals in the market, whether the doctors? I was just recently reading an article in the newspaper that all the x-rays which are analyzed by very, very senior consultants, very senior doctors who are having, for example, 40 years of experience, they're able to read that x-ray 60 to 70%. However, if that x-ray is read by the AI driven apps, they can analyze and they can predict, they can give the results with 97, 98% accuracy. So just imagine the world of AI. So I was just telling you, there is a very, very high demand. I'm talking only about Bharat. मैं सिर्फ भारत की बात करता हूँ. तो very high demand of AI professionals, that is 2.3 million professionals are required. So I can say that the investment, the vacuum for investment which is being created is 100 billion. Just imagine this figure, 200 billion. What is 200 billion? That too globally by 2025. 10 years back, can any, if we would have said कि भाई 200 बिलियन का वैक्यूम क्रिएट होने वाला in terms of AI investment forecast, so people would have laughed the way in 2020 people would have laughed on the people who were investing in the share market, the way maybe other chartered accountants are laughing at the people, those who are saying that AI is everything. So this kind of forecast is being provided. So let's move further. Um, After this discussion of chauffeur driven car and AI driven car, I can understand the way your data analytics have actually changed your perception. So let's move further in this. हम जितने भी एरास की बात करते हैं, जितने भी एरास चेंज होते हैं, उन सब में टेक्नोलॉजी चेंज होती है. हमने अभी कैलकुलेटर्स की बात की, हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं. कंप्यूटर्स जब मार्केट में आए थे, तो तभी भी हम सब यही सुनते थे कि कंप्यूटर्स जो है वो लोगों की जॉब ले लेंगे, जॉब ले लेंगे. लाइकवाइज वी आर हियरिंग इन दिस एआई. अच्छा, एक और उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं रिगार्डिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन. भारत में जब हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उस समय दो कैटेगरी के लोग निकल के आए. पहला पर्सन जो निकल के आया वो था, लोगों ने देखा कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. अच्छा, इससे प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स बढ़ रही है. एंड दे डिडंट अंडरस्टूड कि हमें क्या इसके प्रॉस हैं, क्या हम इसके कॉन्स हैं. इसका मतलब अगर मैं इस चीज को रिलेट करता हूं एआई से, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एआई कर सकता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एआई नहीं कर सकता. लाइकवाइज ग्रीन रेवोल्यूशन में देयर वर टू कैटेगरी ऑफ पीपल. फर्स्ट कैटेगरी वाज दे जस्ट हर्ड अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन. हरित क्रांति के बारे में उन्होंने किसी भी स्रोतों से सुना और वो जस्ट कूद गए. Initially, they made good earnings. Initially, they got good production, they got good produce. The farmer produce were good. But at the later stage, they were not able to survive in that fashion in which they were promised. Likewise, दूसरी कैटेगरी एक थी जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को, हरित क्रांति को इन डेप्थ समझने की कोशिश की, उसके बारे में जानने की कोशिश की, उसको अच्छे से समझने की कोशिश की. जब उन्होंने हरित क्रांति के बारे में प्रॉपर जाना, उसके बारे में ये जाना कि क्या इससे बेटर हो सकता है, क्या इससे खामियां हैं, क्या चीजें नहीं हो सकती, उन्होंने उस हिसाब से इसका प्रॉपर एक रोड मैप बनाया. एंड इस रोड मैप को बनाने के बाद उसने ग्रीन रेवोल्यूशन के जो भी टूल्स थे उनको इनकॉर्पोरेट किया. एंड द काइंड ऑफ फिनोमिनल ग्रोथ दे मेड in this Harit Kranti was impeccable. Likewise, I am just um, incorporating this fact with the AI thing that हमें
Since we have already joined the level 1 course of AICA, it means that हम सेकंड कैटेगरी ऑफ हरित क्रांति में फॉल करते हैं. चीजों को पहले हमें समझना है, उसके बाद हमें इनकॉर्पोरेट करना है. So let's move further. I think this point must have been like very, very clear that we need to understand the AI thing. अभी हम लोग आगे चल के कुछ prompts कुछ होता है. Just keep park this thing aside. Prompt कुछ होता है, जब हम उसको समझेंगे, then you will come to know why I said this. We need to understand what is AI. Rather भेड़ चाल में चल के हम डायरेक्ट इसको इनकॉर्पोरेट इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट जो है इससे ले पाएंगे. आगे बढ़ते हैं. One more thing again I want to introduce here, that this AICA course for 3 days, I really really want सभी लोग इसमें participate करें. Plus the presentation which I'm using, this will not be shared with anyone. There's some institute's protocol, so जिसको भी इसका photo click करना है, they can click that so that they can use it at the later stage. One more thing, just ये आप इमेजिन मत करिएगा कि 3 days आपने इन्वेस्ट किए, दिस इज डन. दिस इज लेवल 1. 3 दिनों में यू विल हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. आपको पता चलेगा व्हाट इज द यूज केस. उसके बाद आई रियली वांट दैट यू शुड टेक अ डीप डाइव इनटू दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस एआई वर्ल्ड. 2-3 चीजें और इसमें ऐड करता हूं. आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है कि एआई हैकेथॉन्स आर गोइंग ऑन? आप लोग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट आई प्रिज्यूम रेगुलरली चेक करते होंगे. हाँ, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट एआई हैकेथॉन. You should also prepare your use case after having this hands-on experience about AI. Or if due to any constraint you are not able to prepare your use case in the last day of the session, so we will everybody is aware that we have created already, you might have got the groups PDF. I mean 80 पार्टिसिपेंट्स को हम लोगों ने जितने भी ग्रुप्स में बाइफिकेट किया है, सबको पता है कौन किस ग्रुप में है. तो एट द लास्ट डे वी विल बी डूइंग यूज केस थिंग. ठीक है, यूज केस के बारे में मैं आपको एक बार ब्रीफली बताता हूं बिफोर मूविंग अहेड. यूज केस का मतलब ये है, हम लोग एक यूज केस क्रिएट करेंगे आफ्टर यूजिंग दिस AI tools, any AI tool you can use, जिसमें हम इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. द फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आप इसमें डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग और इसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, इसका टेक सॉल्यूशन क्या होगा. आप इस टेक सॉल्यूशन को मेंशन करेंगे. थर्ड इज द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट दिस प्लान. जो सॉल्यूशन आप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन आप बता रहे हो, आप उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे इसके अंदर. ठीक है, लास्ट इज द कंक्लूजन. सो दीज विल बी द 4 स्टेप्स. यू कैन स्टार्ट मेकिंग माइंड मैप. आई एम यूजिंग दिस वर्ड कैटेगोरिकली, माइंड मैप. अभी हम इस टेक्निकल वर्ड पे आने वाले हैं. व्हाट इज माइंड मैप? आज मैं एक बहुत जबरदस्त टूल के बारे में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लोगों को देने वाला हूं, दैट इज नोटबुक LM. ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात और कही थी, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि हाउ कैन यू मेक अ वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट, वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट in 10 minutes. This is not a joke. We will actually be doing this practical thing very soon. So I was just stating that there will be this 4 pointers. That's first one is the problem statement. Second is the related technological solution for this problem. Third is the implementation plan. हम क्या implement करने वाले हैं इसमें, how we are implementing this tech solutions, and the fourth one is the conclusion. Hope these 4 things are clear. On this basis we will be heading towards this the presentation thing. बहुत छोटा होगा, लेस देन 10 minutes. एक ग्रुप होगा, एक पर्सन आके उसको प्रेजेंट करेगा, एवरीवन कैन इंटरवीन इन दैट. आई वांट दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, है ना. ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. हमने अभी बात किया रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन ऑल द एराज. ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने देखा, हमने इन सब चीजों को देखा. अब एक प्रैक्टिकल यूज केस लेते हैं. ठीक है, जस्ट टू शो हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग. अच्छा, एक चीज और बड़े मजे की आप लोगों को बताता हूं. अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये जो AICA कोर्स है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम 3 दिन में इंस्टीट्यूट आपको चैट जीपीटी सिखाने वाला है? जस्ट से यस और नो. Yes, yes, no, 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 yes, yes, yes. Okay, so I should say that
50% people are saying that आप लोगों को 3 दिन में इंस्टीट्यूट चैट जीपीटी सिखाने वाला है. आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. आपको रीजन बताता हूं क्या. रीजन ये है कि एआई वर्ल्ड में भी एवरी डे इतने चेंजेस हो रहे हैं, इतने अपडेट्स हो रहे हैं, इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है that if you will pick any single tool, even chat gpt, meta ai, notebook lm, cloud, any ai tool you pick up, institute is not at all having the objective कि एक tool में आपको hands on support दें और आपको expert बना दें. This is not the objective. Objective is to have a broader perspective, to understand what is ai. This will actually be the base for you, so that future after this 3 days classes, wherever you will lead, you will understand कि इधर हमें कौन सा एआई टूल यूज करना है. एक बड़े मजे की बात इस इधर इधर बताता हूं आप लोगों को. होप दिस सेशन इज गोइंग ऑन वेल. आई रियली वांट द फीडबैक फ्रॉम एवरीवन. सी बहुत ज्यादा थियोरेटिकल चीजें होंगी अभी, बट मैं इसको कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा हम लोग इंटरेक्टिव, अगेन सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, दैट इसको हम बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रखें. आप लोगों को जहां पे इशू हो, यू रेज योर हैंड्स. आई रियली आई एम जस्ट लविंग दिस ऑडियंस सिंस पीपल आर रेजिंग द डाउट्स, or we are going with the flow. ठीक है, I have time constraint also. I have to wrap up this technical stuff in the given time. ठीक है, so take an example. आज गवर्नमेंट मुझे बोलते हैं मिस्टर प्रियेश, आपको बड़े जल्दी एक प्रोटोटाइप बना के देना है. ठीक है, एक डिजाइन, एक ब्लूप्रिंट बना के देना है एक ई रिक्शा के लिए. ठीक है, गवर्नमेंट ने मुझे बोला लेट्स प्रिज्यूम that you have to design a prototype of a better e-rickshaw. रिक्शा समझते हैं सब लोग? यस, सब लोग समझते हैं. तो विद इंडियन मार्केट ये एक गवर्नमेंट मुझे एक टास्क देती है. ठीक है, व्हाट ऑप्शन आई हैव? ऑप्शन आई हैव इज मैं एक बहुत हाई एंड डिजाइनर को पकड़ूं, उससे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करूं, उसको 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, और मे बी मिनिमम टू मिनिमम 1 वीक का समय दूं, और वो मुझे एक ई रिक्शा की डिजाइन बना के देगा. फिर वी विल डिस्कस दिस विद आवर बोर्ड एंड वी विल कम अप विद द फाइनल ड्राइंग. For example, we need to give 4 different drawings, and then we will submit this to the government. It will take minimum 1 month's time. So I did this experiment with one of the AI application, and I just gave a prompt. अभी हम लोग आने वाले हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट, व्हाट इज प्रॉम्प्ट, क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. जस्ट पार्क दिस थिंग. प्रॉम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, मैंने उस एआई एप्लीकेशन में एक प्रॉम्प्ट दिया. अभी फॉर द टाइम बीइंग पार्क दिस. व्हाट इज प्रॉम्प्ट? जस्ट अंडरस्टैंड, प्रॉम्प्ट का मतलब है हम कुछ भी एक कमांड एआई एप्लीकेशन को देते हैं तो वो क्या होगी. मैंने बहुत सिंपल सी कमांड दी, मिनिमल फ्यूचरिस्टिक डिजाइन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा फॉर इंडियन स्ट्रीट्स. भारतीय पटरियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे का डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मुझे चाहिए. ठीक है, तो ये कमांड, this is a practical real example. I'm following AI since 2022. It's almost been about to be like 3 years. In December 2023, I gave this command to one of the AI app, December 2023, and this is the result which I got. Can everyone see my screen? Hope my screen is pretty visible to everybody. Yes. Just imagine that this just imagine ये result मुझे मिलता है. What do you find with this result? I give you 30 seconds for analyze. ठीक है, everyone will say that this is impressive design, but I should say that it is not that much practical. I think just see, I don't think this kind of design, ठीक है, this kind of design seems to be practical. अच्छा है, देखने में बढ़िया लग रहा है, but it doesn't seem to be practical. I have written Indian streets. So see how automatically a resemblance of Taj Mahal AI has automatically taken to be the outer cover of the e-rickshaw. This command was given way back in December 2023. Now the same command
I gave in December 2024 with the same app, but with the updated version. आप लोगों ने सुना होगा AI अपने आप अपनी चीजों से सीखता है, अपने आप अपनी चीजों से AI सीखता है, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए कि दिसंबर 2024 में मैंने सेम कमांड दिया, सो सी द फिनोमिनल रिजल्ट्स व्हिच आई गॉट, है ना। तो इस टाइप के फिनोमिनल रिजल्ट्स हमें इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग, मैं आप लोगों को आई गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम टू एनालाइज दिस फोटोग्राफ, ई रिक्शा की फोटोग्राफ, एंड कम अप विथ व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस इन दिस, ठीक है। सो यस, सो यू हैव 1 minute टाइम टू जस्ट एनालाइज दिस एंड सी। टाइम इज अप। सो आप लोग इमेजिन करिए कि हम लोग आज अगर यही काम, ई रिक्शा डिजाइन करने वाला काम हम किसी को देते हैं, तो इतना टाइम हम लोग किल करते हैं। कोई पर्सन अपना कैनवास लेके आएगा, ही विल स्टार्ट डिजाइनिंग दैट। सो I got these results in less than, less than 30 seconds. These are the results of less than 30 seconds. The phenomenal design, kitna impressive design we can see. And this design of December 2024 seems to be very practical. So people have replied. People are saying that uh, difference what they have seen is, number one, they find that stand is there in the bottom. Okay, fine. This is like good observation. No driver seat. Yes, there is no driver seat available. Great. This is again a very good observation. Oh, someone is saying yellow black color. Maybe I can say that this yellow black color is because of maybe Bombay taxi thing, the fusion of Bombay taxi, I should say. Yes. Okay. Someone has written no doors. Yes. They're human driven rickshaws. They don't, or they also don't have doors or windows available. Fine. However, I should say that this design is very, very, futuristic. बहुत futuristic लगता है, बड़ा amazing लगता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, I am just looking for one very important observation. The very important observation is LED lights. This is, it is not having any bulb or something. It is having LED lights. Next is, can you see there is a solar panel? Solar panel above. Let me mark this. Can you see this solar panel? Everything, this is complete solar panel available. So what do you think? AI can predict the future? Just imagine इससे मेरी चीजें कितनी स्मूथ, कितनी सिंपल हो गई। अभी हम लोग देखते हैं, there are many chartered accountants from big firms, I should say. Every day they are posting the kind of updates in relation to income tax, GST and all and all and all. For example, कल एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, ठीक है, और जीएसटी काउंसिल मीटिंग कंक्लूड होती है और उसका एक 300 पेजर डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल। नाउ 300 पेज का डॉक्यूमेंट अगर आज मैं रीड करने बैठूं, आप रीड करने बैठे, it will take minimum to minimum 2 to 3 days of time. But just after conclusion of that GST council meeting, immediately एक हमें 10 bullet pointers का मैसेज आता है along with the photograph of that professional. So everybody starts following that professional. So what do you think? They have this complete social media marketing team available with them? The answer is no. They are not having. They are using AI. They are using this hands-on experience of AI into day-to-day practice and having exponential growth in the mediocre practice. So that's what the objective is, to implement these things in day-to-day practice. So now let me summarize this photograph. So there is no driver seat. It is again futuristic. Solar panels are there. So there's it again futuristic. No fuel tank or cover of that is available. It means that again futuristic. No bulb or something is there, only LEDs there to save the to conserve the energy, again futuristic. So this kind of futuristic designs can be given. Now you compare this design with this design. So the kind of exponential growth which AI is doing
is phenomenal. This point I just want to make very clear amongst us. Okay, चलिए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एंड इस एग्जाम्पल से मैं एक चीज कंक्लूड करता हूं कि एआई इज गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे. हम जो प्रॉम्प्ट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रॉम्प्ट्स हम लोग बहुत इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे इट्स लर्निंग, मशीन लर्निंग, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, न्यूरल नेटवर्क्स. ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को सुनने में थोड़ा एलियन लग रहे होंगे, दीज वर एलियन फॉर द होल वर्ल्ड certain थोड़े टाइम पहले, but everyone is well versed. So the objective is we also want to be like very well versed with this. All right, आगे बढ़ते हैं. So because of AI, the ability to predict is going on the very very higher side. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, क्या ये फ्यूचर देखने में भी हमारी हेल्प कर सकता है? क्या ये कमेंट हम लोग कर सकते हैं? चलो अभी मैं आपको अगेन 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं. जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स yes, 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 yes. There's no person who is saying no. It means that AI we can, for the time being we can say that AI can predict the future, the kind of designs it is giving, है ना? इसलिए चलिए, so एक और एक जबरदस्त एग्जांपल हम लोग लेते हैं. ये मेरा फोटोग्राफ है. दिस इज द ओरिजिनल इमेज ऑफ 2004. इसके बाजू में आप लोग एक जो इमेज देख रहे हैं, ये जो आप लेफ्ट साइड वाला जो इमेज देख रहे हैं, ये वाला जो इमेज, लेट मी मार्क दिस, ये वाला जो आप इमेज देख रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल इमेज. और उसके बाद आप लोग जो बाजू में देख रहे हैं, दिस इज थ्रू जेनरेटिव एआई. हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है अबाउट जेनरेटिव एआई, है ना? सो दीज जस्ट पार्क दीज टेक्निकल वर्ड्स फॉर द टाइम बीइंग, वी विल कम ऑन दिस थियरी थिंग, जेनरेटिव एआई. सो आई हैव यूज्ड Photoshop AI. Photoshop सबने सुना है? Yes, everyone have heard this Photoshop. Photoshop is again integrated with AI, and kind of results it is giving, that is phenomenal. And किसी को पता नहीं है, no one will ever know where this AI thing is leading us. तो लेफ्ट साइड वाला जो आप इमेज देख रहे हैं, दैट इज द ओरिजिनल इमेज. तो लगभग कुछ इतना मेरा इमेज ओरिजिनल है, इतना. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियर होगा इससे. ठीक है, फोटोशॉप एआई को यूज करके मैंने इस इमेज को एक्सटेंड किया. अब जो राइट हैंड साइड जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, वॉल आप जो देख रहे हैं, ठीक है, दैट वॉल इज अगेन, कहीं से भी समझ नहीं आता कि कहां से एआई वाली चीज खत्म हो रही है और कहां से जो कहां से जो ओरिजिनल इमेज खत्म हो रहा है, कहां एआई वाला इमेज स्टार्ट हो रहा है. जस्ट सी, मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट पे मार्क किया, है ना? ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये हुआ, ये एक लाइन में यहां से ड्रॉ कर देता हूं. सी, दिस इज द लाइन व्हिच आई हैव ड्रॉ. तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, black and white image is the original image, and apart from this everything this is created by AI. So we can say that, we can make a statement that nobody will ever know where the reality ends and AI start. हम लोग कितने लोगों के वो सब हम लोग देखते हैं, कितने लोगों के हम लोग वीडियोस देखते हैं which are AI made. So that is the reason the institute is even again planning to come up with certain standards so that there is, the usage is in the best possible manner of the AI tools by the member of the Institute of Chartered Accountants of India. All right. So hope you understood this example. आगे चलते हैं. इसके बाद अभी AI ने अपनी बाउंड्रीज को बहुत बढ़ा दिया है. ठीक है, एवरीथिंग जो इस फोटो में मैंने आपको बताया, एवरीथिंग आउट ऑफ दिस ब्लैक एंड व्हाइट इज एआई जनरेटेड. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द जेनरेटिव एआई. ठीक है, अभी आप देखिए ना, दिस इज एब्सोल्युटली सीमलेस. कहीं से समझ ही नहीं आ रहा. इस फोटोग्राफ में आप देखिए, कहीं से समझ ही नहीं आ रहा कि कहां पे एआई खत्म हुआ और कहां से एक्चुअल इमेज खत्म हुई और कहां से एआई शुरू हुआ. ठीक है, सो आई कैन से व्हाट एआई कैन डू. अभी इधर हमें ये समझने की जरूरत है व्हाट एआई कैन डू और व्हाट एआई कैन नॉट डू. ठीक है, नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस एआई एडॉप्शन रोड मैप. व्हाट इज एआई एडॉप्शन रोड मैप? एआई एडॉप्शन रोड मैप इज, हमें ये चीजों को समझ के चलना है दैट ये जो 3 दिवस की हमारी कार्यशाला है, 3 दिवस का जो हमारा एआईसीए कोर्स है, ये 3 दिवस जब खत्म हो जाएंगे तब एक्चुअली आपका एआई एडॉप्शन रोड मैप शुरू होगा. सो दिस इज द फर्स्ट होमवर्क विच आई एम गिविंग.
to all the senior members sitting here, from the age gap of 23-24 to 75-80. आप लोगों को घर जाके, this is the first homework which I am giving, AI adoption roadmap you have to follow. What is AI adoption roadmap? हम AI को कैसे अपने डे टू डे प्रैक्टिस में, कैसे अपने डे टू डे वर्किंग में, कैसे प्रोफेशनली हम लोग इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सी, फर्स्ट पॉइंट इज टू जोट डाउन. जोट डाउन का मतलब हमें सिर्फ नोट डाउन करना है, लिखना है. ठीक है. We need to write down all the tasks which we do. Inverted commas, repetitive task primarily. There are certain tasks which we do every day, and these tasks are the repetitive task. ठीक है, उनको हमें जोट डाउन करना है. वी नीड टू राइट डाउन ऑल द टास्क, कि हम लोग ऐसे कौन से टास्क हैं विच वी डू एवरी डे. ऑफिस जाते हैं हम लोग, ऐसे कौन कौन से टास्क हैं जो हम लोग रोज करते हैं. ठीक है. सेकेंड इज, वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड जज कि इसमें से ऐसे कौन से टास्क हैं विच कैन बी डन बाय एआई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें से कौन से टास्क को कर सकता है. Okay, just hold on. With there's someone who is raising the hand. Yes. So very, very nice question this person is asking. Sir, I just wanted to know that how we will be able to identify that which task can be done by AI. Yes. So very important question. I'm just loving your question. I will answer this question. There is again an AI for that. What is that AI? The name is, there is an AI for that. If you will open this application program and if you will plot your objective, that XYZ things we need to do, this is the objective. I need to convert this tally backup into an Excel, the formula driven Excel. Which AI tool can be used for this? So this, everyone can write it down. There is an AI for that. I'll just write it down. There is an AI for that. I have written this, and you all can also write it down. So there is an AI for that. You can use this tool just to find, just to identify. Again, I will come on this important point, that is the prompt thing which we need to understand, that the technical thing which is really, really important. We will focus on that. So it means that we can use this application and understand that हम लोग इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, वॉट एवर इज योर टास्क, उसके लिए हम लोग कैसे एआई का डे टू डे यूज कर सकते हैं. सो just to summarize the AI adoption roadmap, first of all, we will jot down all the important aspects, all the important tasks which are repetitive in nature, or even they are not repetitive in nature, and we will identify that these are all the tasks which should be automated होना चाहिए, हम इनको automate कर सकते हैं. Third is to find the tool, and by using this, there is an AI for that. We can use this tool and find out the best AI driven program which will be suited in this situation. Okay. Interrupt. I'll just interrupt in between. I'll again mention one more very, very important tool, that is Product Hunt. Let me write this down. Product Hunt. Product Hunt. What is Product Hunt? Product Hunt is again an application in which all the new upcoming startups, किसी ने भी कोई AI driven कोई program बनाया है, that person put that program at Product Hunt along with its all actual case studies. So there are big techies available. So these people identify and they give the reviews to their program. So again, these are the two programs, that is there is an AI for AI for that, and the Product Hunt. These two tools you can use, these two programs you can use to find out the tools which will be best suited for this. Okay, fair enough. Till here, if anyone is having any kind of doubt, just raise, and so that we can again move further. I can understand a lot of theory things are going on, but this is the part of the curriculum. We need to go through this. Bear with me for the time being. We will be again jumping to the practical examples. Okay. So just now I mentioned about the green revolution thing. उस समय दो parts में चीजें break हुई थी. Now, if I talk about the CA fraternity, हम लोग CA members के बारे में बात करते हैं. Over this period of 2-3 years, what I have realized is
Again, there are two communities in the CA group which have been created in the perspective of AI. That is, there is one group, which is group one. They are saying that AI will take our jobs. So we have to be bahut dur with the AI. The other group is, which is the group number two, that is saying that AI will multiply our productivity. So again, 30 minutes poll we are doing. I just wanted to know who is with the group one and who is with group two. I'm just waiting for 30 seconds. Two. Everybody is with group number two. So people around here, I mean, 81 chartered accountants, 80 those who are sitting, and one me, 81 chartered accountants here believe that AI will multiply our productivity. In last 40-45 minutes discussion, my focus is just to make you understand what should be the AI adoption thing. ठीक है. So all right, moving ahead. अच्छा, अभी आप लोगों से बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल मैं पूछता हूँ. थोड़ा थियोरी से मूव होते हैं, प्रैक्टिकलिटी की तरफ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. आप लोगों से मैं पूछता हूं दैट what is do you what do you feel like? किसी ने गूगल डीप सर्च देखा है क्या? गूगल डीप सर्च, anybody aware about गूगल डीप सर्च? yes. Okay, many people have seen this. Okay, कितने लोगों ने चैट जीपीटी देखा है? Oh, very silly question. Everybody might have seen this chat gpt. I think 90% of the people. Anyone who don't know chat gpt can raise their hands. No one is there. So everybody is available. What do you think? We have this rumor in the market that chat gpt is better than the google deep search. So let me give you a practical, difference between these two. What google deep search does is google deep search uses google as the search engine, whereas chat gpt uses bing as the search engine. So what do you think कि किसके पास ज्यादा ग्रेविटी है in terms of the data, google or bing? I should say google has more and bing has the less. Comparatively, if we compare this with google, it has lesser this thing. Okay? So I was giving you the context that how strong is google deep search and how strong is chat gpt. So google deep search, that is the gemini thing. Google Gemini, what Gemini is using, it is using approximately 350 odd resources to analyze and produce the results, whereas chat gpt is using 40 odd resources to analyze and give the result. And it is using bing, it is using google over the chat gpt. All right, आगे बढ़ते हैं further. Now अगेन एक और प्रश्न आप लोगों से मैं पूछता हूं, एंड वो प्रश्न है कि ऐसा कौन सा टूल है मार्केट में विच इज द बेस्ट एआई टूल? कौन बताना चाहता है? ओके, तो आई एम गिविंग यू 30 seconds टाइम टू राइट इन द चैट बॉक्स, और you can raise your hands. I'll provide you the access. So I'll just listen which is the best AI tool. Okay, so people have started writing. People are writing ChatGPT, Applaud, Cloud, Notebook LM. Okay, Meta AI. Okay, great. Okay. So I am asking you, which is the best tool available in the market? Best AI tool available in the market. आप लोगों को याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जो AI driven market है, it is phenomenally changing day. Every day there is an update. So for to answer this question, I should say that there is no best tool AI tool is available. It is the objective which drives. अगर आपको कुछ डीप सर्च करना है तो जेमिना इज गुड. अगर आपको पावरपॉइंट रिलेटेड कुछ काम है, गामा इज रियली गुड. अगर आपको बेसिक डे टू डे मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, परप्लेक्सिटी इज रियली गुड. सो इट मीन्स दैट what point I am trying to make is the foundational problem which people make, the foundational mistake which people make. What is that foundational mistake? The kind of prompt, the kind of text which we give to the AI tool expecting the output. अब हम लोग आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन को टैग किया था, that is what is a prompt. So we are coming on to that. What is a prompt? मैं आप लोगों को एक पंचतंत्र देने वाला हूं. पंचतंत्र है ना,
This is very striking word, Panchatantra. I'm giving you this Panchatantra. The reason is that before giving any prompt, before giving any command, to understand what is prompt, just understand it is a kind of a command which we are giving. For example, if we are writing to the chat GPT that can you write an email for me to book to schedule a meeting with Mr. A. All right. So this single liner command or instruction which you're giving to any AI, that is actually the prompt. एक और मजे वाली बात आप लोगों को बताता हूँ, जो पंचतंत्र की मैं बात कर रहा हूँ. There was a book which was published way back in 2022 that the name of the book was Prompt Engineering. So prompt engineering is actually the future. Prompt engineering का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कंप्यूटर से ह्यूमन लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में इंटरैक्ट कर सकते हैं. So that is actually the prompt. And people screw up here, I should say. I'm using the word screw up here. Abhi recently, last year, I was into one of the sessions of again AI only. That was a very, very early stage. In that session, people mentioned one of the very senior faculty. He used that if your prompt is less than 5 lines, that is vague. Vague. That is shit. I should say. अगर 5 लाइन से कम का आपका प्रॉम्प्ट है, अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हो, हाउ इज इंडिया and US relationships going on, it means this is shit. This is vague, very vague. If that is less than 5 lines, that should be thrown away. That's garbage. That's not of any use. It means that what prompt is. So the question was, which is the best AI tool available in the market? And the answer is, there is no best tool available in the market. It's that the fundamental problem, which is the prompt thing, the kind of input you are giving to any tool will be the base for that to give the output. इसका मतलब क्या हुआ? We have to be very very particular about the prompt engineering. हमें prompt कैसे देना है? मैंने एक चीज ऐड की, अगर 5 लाइन से कम है, ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज किया that it is a पंचतंत्र. चलो, let's understand what is a पंचतंत्र. ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. एवरीबॉडी इज अवेयर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस पता है क्या सभी को? Yes, photosynthesis, the way in which leaves prepare food for the plant in the sunlight. हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट सेकंड क्लास स्टैंडर्ड्स में. तो हम लोग यही चीज आज अगर हम लोग किसी एआई टूल से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, हम लिख सकते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. इट विल गिव लॉट ऑफ डेटा that will be vague again, but we want pinpointed reply. Do you know why people are not going to not using Google nowadays? हम Google को कुछ भी लिखते हैं, वो certain थाउजेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है. हम चैट जीपीटी को कुछ लिखते हैं, वो पिन पॉइंटेड सिंगल लाइनर अमेजिंग रिजल्ट वो देता है. बट हम चैट जीपीटी को क्या लिख रहे हैं, क्या कमांड दे रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दैट इज प्रॉम्प्ट. नाउ वी आर डिस्कसिंग द पंचतंत्र. Panchatantra. Just fit this word in your mind, Panchatantra. Now, from this time, whenever you are interacting with any AI tool, we will keep this Panchatantra in our mind so that best of the best results we have. Okay, so let's move further about Panchatantra. Again, an example. Photosynthesis है, हम पूछना चाहते हैं, ठीक है. So this is the prompt which I have written. Act as a helpful tutor. Okay, this is let me read out this prompt first, then I will explain the technicalities of this. Okay, act as a helpful tutor. This is marked in a circle that is in the kind of a orange color, who breaks down the complex subject into easy explanations. इसका मतलब क्या हुआ? इसको अपना रोल आपने डिफाइन कर दिया कि इसको क्या रोल लेना है. हम इसी एग्जाम्पल को बीइंग इनटू सीए फ्रेटर्निटी इधर कैसे फिट होगा, उधर भी हम इसे फिट करने वाले हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. I want you to explain the process of photosynthesis to a 14-year-old student. ठीक है, I want
you to explain the process of photosynthesis to a 14-year-old student. हमारी audience कौन है? That is 14 years old student. To assist with a biology examination preparation. उसको context क्या है, उसे क्या करना है? Biology examination की preparation करना है. Boundaries क्या है? कितने words में होगा? 5 lakhs words में? 10 lakhs words में? नहीं. Your answer should be in 300 words. That is the boundary you have defined. You have given the एक आपने लक्ष्मण रेखा खींच दी इसमें. Written with the tone that's friendly and educational. Oh, यहाँ मुझे एक बड़ी अच्छी interesting चीज याद आ गई. Friendly and educational tone. I was just reading in the newspaper quite some months back that one of the Indian-born person based out at UK London, एक 15 years old बच्चा था, kid था. He raised a prompt to the AI module. It responded मर जा जाके. This is real example, you can Google it out. मर जा जाके. So बहुत विवाद हुआ, बहुत problems create हुई इसकी वजह से. तो what do you think it whether this is being programmed? For example, Gemini ने ऐसा किया, तो क्या Google ने उसको प्रोग्राम किया है? 14 years old कभी आपसे कुछ वे क्वेश्चन पूछता है, so you can write down मर जा जाके. No, because it learns every day with all the prompts and the kind of discussions you're having. So always try to say thanks. If you're happy with the result, you should always give the feedback to the AI. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So we were discussing the elements of the good prompt. इसमें first of all मैंने persona. These are the 5 things: persona, objective, audience, context, boundaries. These are the 5 पंचतंत्र. इन 5 चीजों को हमेशा याद रखना. What is persona? कि आप क्या चाहते हो एआई क्या रोल प्ले करे. इसमें हम क्या चाहते हैं? एआई शुड एक्ट एज अ हेल्पफुल ट्यूटर. एक ट्यूटर की तरह हेल्प कर रहा है वो. ठीक है, दैट इज मार्क्ड इन ऑरेंज एंड पर्सोना इज रिटन इन ऑरेंज. सो दिस इज पर्सोना. सो इसका मतलब ये हुआ, आप उसको ये बोल रहे हो कि आप इच्छाधारी हो. आप इच्छा के हिसाब से आप सीए भी बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो. एक अमेजिंग फैक्ट आप लोगों को इधर बताता हूं. देयर आर सर्टेन cameras of Nikon and other companies. So whenever we wanted to generate the image, so what image generator engineers, what they do is they give the persona as you are the DSLR XYZ. They actually write the latest best of the best cameras available in the market. In this way they give the persona. Second is objective. Objective क्या है? हम क्या कराना चाहते हैं AI से? The objective is to we just want that AI should explain the process of photosynthesis. Perfect. आगे बढ़ते हैं. Next is audience. ये जो आप टास्क करा रहे हो, इसको किसको मिलने वाला है? This task will be accomplished and this data will be given to 14 years old student. तो आपने audience भी define कर दिया. ये किस context में है? कौन सा context है? ये तो जो underline देखिए, dotted underline. Just mark this. प्रगति. ठीक है, ये to assist with biology examination preparation. ठीक है, so this is the context which you have given. Next is regarding setting up the boundaries. You have written that 300 words आपने define कर दिया. 300 words हो सकता था वो 2 लाइन में कंप्लीट कर देता, फोटोसिंथेसिस की सिर्फ डेफिनेशन दे देता. So that is why you have given, you need this output in 300 words written in the tone that is friendly and educational. ठीक है, so this is actually the element of a good prompt. इसको समझना होगा. This is very very important thing. This is actually the base of prompt engineering. ठीक है, आप लोगों को बोला 2022 में एक बुक पब्लिश हुआ था. आफ्टर समराइजिंग दैट बुक, इंस्टीट्यूट हैव गिवन दिस 5 पंचतंत्र. ठीक है, पर्सोना, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस, कॉन्टेक्स्ट एंड बाउंड्रीज. ठीक है, इसमें मैं आपको 3 टिप्स एडिशनली देता हूं. दीज टिप्स आर, वी शुड ऑलवेज गिव वेरी 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 क्लियर इंस्ट्रक्शंस. वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस, है ना. आप जितना वेग इनपुट डालोगे उतना वेग आउटपुट आपको मिलेगा. जितना क्लियर इंस्ट्रक्शंस डालोगे उतना क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलेगा. ठीक है, ऐसे कमांड्स यूज करना चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्ट हमें एआई को करना चाहिए जिससे हम लोग ऐसे टर्म्स यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन, ट्रांसलेट, जनरेट, समराइज,
कंपेयर, ऐसे वर्ड्स अगर हम लोग यूज करते हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी गुड प्रॉम्प्ट. The kind of output which we will get after using such instructions, such prompts will be amazing. All right. Second tip which I want to give is we should always provide context. Context हमें क्यों देना चाहिए? Context हमें इसलिए देना चाहिए कि हम लोग इस कमांड को देके, इस आउटपुट को निकाल के हम क्या चाहते हैं, हमें क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने वाला है. कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अगर हम लोग देते हैं तो एआई जो अपना टास्क है उसको बेटर वे में परफॉर्म करने लगता है. ठीक है. और हम लोग अगर समझें, इसका एक एग्जांपल दें, तो वी कैन यूज द वर्ड लाइक गिव अ शॉर्ट स्टोरी, गिव अ रिपोर्ट, गिव अ आउटलाइन. तो इससे एआई को समझ में आता है दैट इट हैज टू प्रोवाइड अ आउटलाइन. तो वो इतना एन नंबर ऑफ डेटा, हेफ्टी डेटा को समराइज करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में आपकी तरफ प्रेजेंट कर सकता है. Third tip in relation to the element of good prompt, which I would like to mention is that we should always experiment. This is really important. आप लोग 3 days के बाद घर जाने के बाद अगर ये सोचते हैं that 3 days में we have learned everything, you're not on the right track, man. AI is changing every day. AI is changing every day. You should take part in the hackathon. You should, whenever you get time, whenever you're traveling, whatever you are doing, you should watch one-on-one use case. You know, these use cases are very small, about 10 minutes. 10 मिनट में आपको सीए से रिलेटेड, हमारी फ्रेटर्निटी से रिलेटेड इतने जबरदस्त यूज केसेस मिलते हैं. एंड इमीडिएटली दे, इन दैट यूज केस, they actually, what they do is they have bifurcated these use cases into 4 parts. The first is the problem statement thing. Problem statement में वो आपको पूरा प्रॉब्लम डिफाइन करके दे रहे हैं. ठीक है. उसके बाद उससे रिलेटेड क्या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन इसका हो सकता है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. आपको प्रॉब्लम पता चल गया, यार मुझे टैली से इस डेटा को एक्सपोर्ट करना है इन एक्सेल, दैट टू द फॉर्मूला ड्रिवन एक्सेल. हम टैली से जब एक्सेल को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें फॉर्मूले नहीं होते कभी भी. ठीक है. बट हम उसको एक्सेल में माइग्रेट करना है एंड दैट शुड बी फॉर्मूला ड्रिवन. हमारा टास्क कितना इजी हो गया. ठीक है. उसका इंप्लीमेंटेशन प्लान क्या होगा. ठीक है. उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या है. सो दीज आर द 4 बेसिक एस्पेक्ट्स जिसमें ये हमारे यूज केसेस, हैकाथॉन में भी लोग ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं. ऑल दीज यूज केसेस आर अपलोडेड. तो जस्ट इमेजिन हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं डे टू डे. ये 3 दिवस की कार्यशाला अंत नहीं है, ये शुरुआत होगी हमारी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो हमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना होगा. डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट टेक्निक्स आप दीजिए एआई को. डोंट गेट द रिजल्ट्स यू वांट. इफ यू डोंट गेट द रिजल्ट्स, सो प्रॉम्प्टिंग को अपना बेटर करिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनिए, प्रॉम्प्टिंग को सुपर्ब बनाइए. जो पंचतंत्र हैं उनको यूज करिए. दैट्स व्हाट माय प्लान इज. ठीक है. ओके. थोड़ा सा और हम लोग एक चीज और इसमें ऐड करता हूँ. यू शुड गो थ्रू द डिजिटल लर्निंग हब पोर्टल एज वेल. जबरदस्त पोर्टल है वो. आपको इससे रिलेटेड हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल लर्निंग हब पोर्टल पे आपको मिलने वाले हैं. ठीक है. और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल इन रिलेशन टू यू नो दिस in relation to our own field. That is, again, I have given act as a chartered accountant tax consultant who tax saving in recent amendment in GST law and their impact on the small and medium businesses to a client who is unfamiliar with the tax regulations. Your answer should be 250 words written in the tone that's clear, practical, and client friendly. Just imagine, this is such a super prompt. This is because persona, objective, audience, context, boundaries, everything is covered in this, everything is covered. So we should be very clear with this. Okay. Now, moving ahead with this, एक हम लोग एक बात करते हैं. ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दैट इट शुड बी लाइक वेरी क्लियर, स्पेसिफिक. वी शुड कंप्लीट द सेंटेंसेस. वी शुड ऑलवेज इंक्लूड द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. वी कैन इवन यूज एग्जांपल्स. आप एग्जाम्पल देके देखिए एक बार एआई टूल को, किसी को भी, आपको मजा आ जाएगा. द काइंड ऑफ आउटपुट यू विल गेट, ना, स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा आपको, हमारे कॉन्टेक्स्ट में आउटपुट मिलेगा आपको. ठीक है. एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फ्रेजिंग. ठीक है. यूज अप्रोप्रिएट लेंथ. मैंने एक बात बोली थी, फिर से रिपीट करता हूं, 5 लाइन से कम का अगर आपका प्रॉम्प्ट है, दैट इज वीक, आई शुड से. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट सी दिस, आई एम जस्ट मार्किंग दिस. हम बोल रहे हैं उसको कि हाय एआई, आपने मुझे ये बताया नहीं. ठीक है. या आपको ये चीज पता थी, माय गॉड,
मुझे तो पता ही नहीं था कि आप ये जानते हो। तो व्हाट इज ही सेइंग, यू नेवर आस्क। आप पूछ के तो देखो, आप अपना प्रॉम्प्ट जबरदस्त बना के तो देखो, पंचतंत्र को इंक्लूड करके तो देखो, कितना मजा आने वाला है हमारे काम में। ठीक है, थोड़ा सा और स्लाइटली हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट एक बात करता हूं मैं रिगार्डिंग अगेन न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक ट्रेंड है मार्केट में, आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस ट्रेंड, आपको उसके बारे में एक फ्लेवर देता हूं। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है टेक्नोलॉजी बनाने वाले से, टेक्नोलॉजी क्रिएट करने वाले से ज्यादा पैसा जो टेक्नोलॉजी को यूज करता है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टार्टअप्स, वो कंपनीज बनाते हैं। एग्जाम्पल, पुराने जमाने का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, रेफ्रिजरेटर्स। जिस कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, फर्स्ट इंडियन मार्केट्स में उतारा, उससे ज्यादा पैसा, उस कंपनी से ज्यादा पैसा फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज, स्टार्टअप्स ने, मे बी आइसक्रीम मेकिंग कंपनीज ने बनाया। सेकंड एग्जाम्पल, आज इंटरनेट को कौन लेके आया? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यूएस गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया इन देयर मार्केट्स। ठीक है, उससे ज्यादा इंटरनेट मार्केट में लेके आने से ज्यादा पैसा किसने बनाया? उससे ज्यादा पैसा किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया। गवर्नमेंट की जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं विच यूज्ड इंटरनेट, दे हैव मेड मैसिव मनी, मैसिव मैसिव। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग, हम लोग बात करते हैं एरोप्लेन। तो ये जो एरोप्लेन्स हैं, एयर बसेस हैं, फॉर एग्जांपल राइट ब्रदर्स ने बनाया। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट द काइंड ऑफ मनी which airline companies are making, that Wright brothers might have made? The answer is no. The point which I am trying to make very clear and present in front of all of you is that कि बनाने वाले से ज्यादा, टेक्नोलॉजी बनाने वाले से ज्यादा पैसा टेक्नोलॉजी यूज करने वाला कमाता है। ठीक है, लाइकवाइज ओपन एआई ने अगर चैट जीपीटी बनाया है, या फेसबुक ने मेटा एआई लेके आया है, या गूगल डीप माइंड्स जेमिनाई लेके आया है, तो इन सबको यूज करके स्टार्टअप्स जिस तरीके से दे आर डूइंग वंडर्स, दैट इज इम्पैकेबल। तो इस रेस में वी from CA fraternity, we the member of Institute of Chartered Accountants of India, why should we be lagging? Okay. Startups are using AI like anything, and they are making huge money. They're doing exponential growth. They are doing wonders, I should say. ठीक है, एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को देख के। आप लोग इमेजिन करिए दैट एट टाइम्स पीपल आर वेरी टेरेबल, दे आर टेरेबल इन राइटिंग ईमेल्स, they are they find replying to all the emails very tedious task. But considering the professional etiquette, we should reply to each and every email. Do you so within like 5 minutes, I'll give you a hands fourth experience how we can completely automate our um, email task. Okay, there is a tool that is the Zapier. You can search this out. What this tool does is, okay, this tool works with 99% accuracy. Just imagine an example. If we are getting 500 emails every day and we need to reply for all those 500 emails, it means that replying for 500 odd emails will kill like 4 5 hours of time every day. What we do in office, we go and reply, respond for all. We are not there for execution, we are for management. But what this kind of AI tools are doing, kind of like Zapier, what this is doing, that once the email is received, so it categorizes that email into two to three different categories. We can plan as per our ease, as per our convenience. We can train this Zapier that what should be done with any emails. So I should say that 80 to 90% of the emails require mediocre kind of reply. That's like the common one. We can do this kind of programming in the tool, and it will automatically reply. For example, if someone is wishing me birthday, if someone is wishing me any of the festival or something like that, so this will automatically reply in a very polite words. It once the email is received, what this tool will do, it will read the new email from the inbox, it will send that email to the chat gpt thing, and it will generate the reply, and very smartly it will paste and send the reply automatically for the common emails. Second is the emails which require kind of gravity,
which these kind of emails will be parked separately in the folder in which the human intervention is required. For example, if there's some email which is, for example, if someone is asking for the timing of the meeting, so still that is not scheduled, so that can be scheduled as per own ease. So such emails are parked, and it will when we will open those parked email, it will be probably with 2 3 different kind of replies. We can choose that reply and we can shoot that email back. Okay. The third category is for very very crucial emails. If we talk about the crucial emails, in that what will happen is it will ping on the real time basis if there is some email in relation to, there are certain keywords, for example emergency, such there are accident, there are these crucial keywords are there. If such keywords AI tool will find, it will immediately ping the master, the owner, and we will get the real-time WhatsApp or SMS that this kind of email is being received. So on the real-time basis, we can check out that email. And again, this email will have probably 5 replies. And we can choose any of the reply from that and hit back that email. So just try to understand that this kind of tools are working with 99% accuracy. And these tools are actually saving our time, making a life 10x, productivity 10x. So some normal emails, yes, no types, wishes type, this will automatically be given. Plus, it will always be very positive. At times when we are stuck with work, we're stuck with deadlines and other things, so we are at times pissed off. So the language which we use in our emails is can be at times harsh, but this will never use any harsh languages. Okay. It will segregate the emails. This is again an important feature. For the crucial emails, very important emails, it will ping the owner. Okay. So these are the things which can be done using this. अभी थोड़ा सा और टेक्निकल चीजों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, because technical things are again also important. This is a part of the curriculum. Just bear with me for the time being. Again, I'll try to keep this very interactive, and more practical examples we will cover the way we did in last 1.5 hours. Okay. So now there is a new concept. The name of the concept is AI agent thing, which we will discuss. So in last sessions, you have already seen all the technical stuffs. You understood what are neural networks, you understood LLM, you understood you have henceforth experience about lot of the AI tools. You have seen lot of use cases. You have seen many examples. Now we are moving towards slightly different topic, that is AI agent thing, that is agentic AI. है ना, सुनने में भी बड़ा फिनोमिनल लग रहा है ना, एजेंटिक एआई. वी विल डिस्कस दिस. इसमें हम जबरदस्त यूज केस देखेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, इन हाउ वी कैन क्रिएट अ वेबसाइट दैट टू इन 10 minutes. So stay tuned. Okay, आगे बढ़ते हैं. तो by using this agentic AI, what is LLM? LLM का हम लोग अगर एग्जांपल लेते तो what is ChatGPT? ChatGPT is LLM, like large language model. What it does is it has lot and lot of data available. On the basis of that data, it processes that data and give you the output. However, it is in LLM, these are ChatGPT, Gemini, Meta AI. These are all the examples of large language model. That is the LLM thing. What happens in large language models is we give the inputs, LLM processes it and gives the output. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं एक बार चैट जीपीटी यूज करता हूं. ठीक है. दिस इज चैट जीपीटी. ठीक है. सो आई हैव गिवन कमांड, आई वांट टू शेड्यूल अ मीटिंग विथ मिस्टर नंदा. ठीक है. ये हम लोगों ने कमांड दिया है. ये वाला कमांड मैंने दिया है. आई वांट टू शेड्यूल अ मीटिंग विथ मिस्टर नंदा, प्लीज क्रिएट अ ईमेल फॉर दैट. ठीक है. व्हाट इट डज इट, जबरदस्त रिप्लाई विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमें मिल जाता है. डियर मिस्टर नंदा, I hope you find I hope this message finds you well. I'm writing to request a meeting with you at your convenience. So blah blah blah. Amazing, with all the information, everything. This is very nice. Now अभी हम लोग क्या करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एलएलएम. मैं आपको बताता हूं क्या शॉर्टकमिंग है एलएलएम के पास. इसके बाद मैंने इसको पूछा व्हेन, इसको मैंने पूछा कि व्हेन
will have a next meeting with him, when I'll have a next meeting with him. तो जो LLM है, LLM is not at all connected. LLM is not connected with any of the tools, Google Calendar or something. So what it is replying, that I don't have access to your calendar or Mr. Nanda's schedule. So I can't see your next when your next meeting is. इसका मतलब क्या हुआ? इसके साथ ये प्रोबेबल ऑप्शंस भी दे रहा है, चेक योर कैलेंडर, रेफर टू द पोस्ट, आस्क मिस्टर निंदा डायरेक्टली, है ना? इस तरीके से ये एग्जांपल्स दे रहा है. सो जस्ट इमेजिन दैट हम लोग एलएलएम की शॉर्टकमिंग्स की बात करते हैं, तो ये क्या रिप्लाई देता है? आई डोंट हैव एक्सेस टू द कैलेंडर ऑफ द मीटिंग. सो इसका मतलब ये हुआ कि एलएलएम की शॉर्टकमिंग क्या है कि इट कैन ओनली रिप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल, और एलएलएम के पास बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, दैट इज एआई वर्कफ्लो, वो आ जाता है. ठीक है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा लार्ज डेटा पे ट्रेंड है. ठीक है. बट दे हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन, दे हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, दैट इज confidential information like personal information, internal company data. तो ultimately I can say that जो LLMs हैं, they are passive in nature and they wait for the prompt and then respond. इसका मतलब they don't have their own option, they don't have their own brain to take the decisions. But yes, they have a lot of data, they are being trained on a lot of data, so they can provide a specific context in relation to that data only. Okay, but they don't have access to the proprietary information. So here now comes the role of AI workflows. AI workflows का मतलब क्या हुआ कि AI workflows का मतलब ये हुआ कि हमने पहले एक इनपुट दिया, when I'll have a next meeting with Mr. Nanda. ठीक है. मिस्टर नंदा के साथ हमारी नेक्स्ट मीटिंग कब होगी? मिस्टर नंदा के साथ हमारी नेक्स्ट मीटिंग कब होगी? तो what it will do is it will be associated with the Google Calendar. It will check the Google Calendars and it will review that, and ultimately it will give the output. So it will inform that it will be at 10 a.m. tomorrow. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में किसी टूल को एसोसिएट कर दिया तो वो एआई वर्कफ्लो बन जाएगा. ठीक है. और एआई वर्कफ्लो बनने से क्या होगा? हमारे जो आउटपुट्स हैं, दे विल बी मोर क्लियर, मोर स्पेसिफिक, मोर बेटर. ओके. अभी इसी में हम थोड़ा सा एक ट्विस्ट डालते हैं इसी कहानी में. हम लोग बोलते हैं ए वर्कफ्लोज में, हम कहते हैं कि चलो ठीक है, मीटिंग कब होगी? उसने आंसर कर दिया जी कल टुमारो मॉर्निंग है 10 o'clock. हम इसमें एक ट्विस्ट और डालते हैं, हम इससे पूछ लेते हैं, मिस्टर एआई प्लीज टेल मी दैट व्हाट विल बी द वेदर टुमारो. अब अगेन स्टक हो गया ये. इसके पास कोई और टूल है नहीं, इसके पास सिर्फ एक ही टूल है, दैट इज गूगल कैलेंडर विच इज एसोसिएटेड विद दिस. ये अगेन परेशान हो गया. इसका आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट ये हुआ इसका. इट इज नॉट एबल टू गिव एनी आउटपुट इन दिस. इसका मतलब ये हुआ कि एआई वर्कफ्लो के आगे भी एक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए. ठीक है. इसमें हमने क्या किया? एलएलएम में पहले गूगल कैलेंडर अटैच किया था, अब हमने गूगल वेदर भी इसमें अटैच कर दिया, और साथ में हमने इसको इनपुट दिया दैट वी वांट दिस आउटपुट शुड बी इन ऑडियो फॉर्मेट. अगर हमने उसको बोला कि हमें ऑडियो फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए है, व्हाट इट विल convert that output in. यहाँ पे एआई वर्कफ्लो में हम लोग ह्यूमन डिसीजन मेकर को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. व्हेन ह्यूमन डिसीजन मेकर इज इंक्लूडेड इन दिस, देन with LLMs, large language models, the output is more specific and more amazing. Now, इसी वजह से जब नई नई चीजें आई और आउटपुट इतना स्पेसिफिक नहीं मिला, तो देन कम्स द रोल ऑफ एआई एजेंट्स, विच इज द फ्यूचर. which is the future, I should say. Everybody should go through this topic very, very carefully. This is really, really important. And you know, एक comment, एक statement मैं आप लोगों को देता हूं that AI agents, जिसके बारे में अभी हम just discuss करने वाले हैं, these AI agents will enter the workforce
will enter the workforce in 2025. This was the headline in the New York Times some days back. Okay. आगे बढ़ते हैं. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्कफ्लो. उसके बाद हम एआई एजेंट्स के ऊपर आ जाते हैं. एजेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, पहले हम लोग बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं. सर बैठे हुए हैं. सर आई थिंक आप बहुत सीनियर हैं. हम लोग आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. सर एजेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, किसने एजेंट्स क्या सुना है एजेंट्स के बारे में? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. रेलवे एजेंट्स होते हैं, ठीक है. उनको हम कहते हैं दैट रेलवे एजेंट्स होते हैं कि एक काम करिए, आप मेरे लिए मुंबई टू शिरडी की एक टिकट बुक कर दीजिए, ठीक है. और मुझे अल्टीमेटली आप बताइएगा कितना अमाउंट पे करना है और मुझे टिकट्स दे दीजिएगा, ठीक है. एजेंट्स क्या करते हैं? सबसे पहले वो रूट्स चेक करते हैं कि कौन कौन से रूट्स अवेलेबल है. फिर वो मोड्स चेक करते हैं कि भाई एयरवेज से जाएंगे, वाटरवेज से जाएंगे, रेलवे से जाएंगे, कैसे जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर थीम में क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. फिर वो देखेंगे कि किस वो उस टिकट्स को चूज कर लेंगे. हाँ, रेलवेज लाइक बेटर और मे बी रोडवेज इज बेटर. फिर उसके बाद वो देखेंगे किस में टिकट्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल दे हैव चोजन रेलवे, सो दे विल बुक द टिकट. टिकट्स भी किस में बुक करेंगे? एसी 2 टियर में बुक करेंगे, एसी फर्स्ट में बुक करेंगे, किस में बुक करेंगे, दैट डिसीजन that agent will take. And lastly, he will book the ticket, take the money, and the work of the agent is done. Now we are discussing about AI agent, that is the agentic AI. ठीक है. So in the similar fashion, agentic AI works. ठीक है. They have actually their own intelligence which is available with them. So एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हम लोग एक कमांड देते हैं, एजेंटिक मतलब एक एआई को हम कमांड देते हैं दैट क्रिएट अ पोस्ट ऑन फॉर इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन बेस्ड ऑन द न्यूज आर्टिकल्स एंड पब्लिश देम एवरी डे एट 8. आप समझ रहे हो क्या क्या हो गया? सबसे पहले तो हमने डिफाइन कर दिया कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे पब्लिश चाहिए. नंबर 2 क्या होना चाहिए? न्यूज होना चाहिए, न्यूज आर्टिकल. इसके बाद कब करना है? रोज 8 बजे ही करना है, टाइम भी स्पेसिफाई हो गया, ठीक है. तो इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले वो लिंक्स को कंपाइल करेगा. आज तक, इंडिया टुडे, एक्स वाई जी सब जगह के लिंक्स को कंपाइल करेगा. उससे जो भी आर्टिकल्स मिलेंगे उनको समराइज करेगा एंड देन इट विल राइट द पोस्ट. ठीक है. तो ये कंपाइल करना, लिंक समराइज करना, पोस्ट लिखना, यहां तक तो ठीक था. दिस कैन बी डन बाय द नॉर्मल एलएलएम मॉडल्स आल्सो, चैट जीपीटी और समथिंग. बट creating the post for Instagram and LinkedIn based on the news article, ठीक है. तो सबसे पहले ये रीजनिंग निकालेगा. क्या करेगा ये? इट विल फाइंड आउट द मोस्ट इफेक्टिव वे कि हम लोग कैसे इन न्यूज को, इन सब चीजों को कंपाइल कर सकते हैं. फिर हम लोग कॉपी पेस्ट कर लें इसको इन द वर्ड डॉक्यूमेंट में, या कोई और वे है जिससे ज्यादा सेंस निकले. फिर व्हाट इट विल डू इज, सबसे पहले लिंक कंपाइल करने के लिए इट विल सर्च फॉर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल. कि कंपाइल करना है तो कौन सा टूल यूज कर ले? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर लेते हैं, नहीं यार मजा नहीं आता उसके अंदर. चलो एक्सेल यूज कर लेते हैं, नहीं 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 इसमें भी मजा नहीं आता, कोई और टूल यूज कर लेते हैं. हाँ, दिस टूल इज गुड, इट विल यूज दैट टूल. सेकेंडली, समराइज करने के लिए क्या यूज करें? फीटू यूज करें, चैट जीपीटी यूज करें, या परप्लेक्सिटी यूज करें? ओ वाओ, परप्लेक्सिटी इज अमेजिंग, लेट्स टेक परप्लेक्सिटी फॉर दिस पर्पस. नेक्स्ट इज पोस्ट लिखने के लिए कौन सा टूल यूज करें? सो इट विल सिलेक्ट द टूल टू राइट द पोस्ट एज वेल. अगर हम इन तीनों को समराइज करें, सबसे पहले स्टेप 1 लिंक कंपाइल करेंगे, XYZ टूल यूज करेंगे. स्टेप 2 समराइज करना है आर्टिकल, XYZ टूल यूज करेंगे. पोस्ट लिखना है, ये वाला टूल यूज करेंगे. और फिर डेली 8 PM पर पब्लिश भी करना है. ये सारे डिसीजंस के लिए इन्होंने सबसे पहले स्टेप 1 कंपाइल कर लिया, लिंक समराइज कर लिया, पोस्ट भी लिख दिया, और 8 बजे जाके पोस्ट भी कर दिया. इसके बाद इसको इटरेशन भी होगा, ठीक है. फिर से रिपीट करना है. दिस इज रिपीटेटिव टास्क बिकॉज एवरी डे दिस इज टू बी डन एट 8. ठीक है. अभी वहीं हम लोग एआई एजेंट्स की बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्रिटिक बॉट बोलते हैं, ठीक है. ठीक है. इसके बाद हमारे लोगों के मन में आएगा कि यार जस्ट टेल मी हाउ आई कैन मेक श्योर दैट इट इज गुड. ठीक है. ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट हैज बीन फुलफिल्ड. मन में ये भी आएगा कि इट विल, आई विल आस्क अनदर एलएलएम टू चेक द पोस्ट. ये भी हो सकता है कि लेट्स रिपीट दिस अंटिल द बेस्ट क्राइटेरिया इज मेट. इसका मतलब इसी टास्क को वो मल्टीपल टाइम्स करेगा अनलेस एंड अंटिल इट हैज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स व्हिच आर अवेलेबल, एंड अल्टीमेटली उसको पोस्ट करेगा और फिर इटरेशन होगा. ठीक है. तो एआई एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है दैट सबसे पहले गोल डिफाइन है.
रीजनिंग में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे स्टेप्स यूज करेगा, बहुत सारे एआई एजेंट्स, इट विल टेक द डिसीजन बाय इट्स ओन दैट हमें इस जगह पे क्लाउड यूज करना है, हमें गूगल कैलेंडर यूज करना है, गूगल मैप्स यूज करना है, सारे टूल्स इट कैन यूज, और फिर ट्राई अगेन 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 अगेन, और जब तक इसको बेस्ट आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक ये फाइनल रिजल्ट्स पब्लिश नहीं करेगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें और फर्दर आगे बढ़ते हैं, और हम लोग एक बार किसी एक एआई एजेंट का हैंड्स फोर्थ एक्सपीरियंस देखते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मतलब मैंने आप लोगों को सिंस इंसेप्शन बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि हम 2 मिनट में वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं। सो लेट्स कम ऑन टू दैट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। लेट मी शो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द टूल दैट इज Manus AI. Manus AI. Let me write it down. Manus AI. This is Manus AI. This is amazing tool. Amazing tool. You will be shocked. You will be astonished to see the kind of result it is giving. Okay. Manus AI is again agentic AI concept पर ये drive होता है, ठीक है। So let me open the app of Manus AI. This is the Manus AI, ठीक है। इसके लिए आज हम लोग एक मैंने वेबसाइट का एग्जांपल लिया था, तो आई हैव गिवन अ प्रॉम्प्ट। याद है प्रॉम्प्ट आप लोगों को? अभी हमने पंचतंत्र डिस्कस किए थे, है ना? डू यू वांट मी टू रिपीट दोस? आई कैन रिपीट दैट। ओके फाइन, एवरीबॉडी इज अवेयर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट इसको दिया है, आई वांट अ प्लान, आई वांट टू प्लान अ 3 days ट्रिप टू दिल्ली, है ना? भारत के दिल्ली में 3 दिवस की हम एक यात्रा करना चाहते हैं, और उसकी पूरी रूपरेखा आइटिनरी प्लीज शेयर करिए, प्लस आई हैव रिटन दैट अकॉर्डिंगली क्रिएट अ वेबसाइट। क्रिएट अ वेबसाइट, दिस इज रियल, दिस इज नॉट वेग, it will create a website for us. All right, so what happens is, what it will do is, see, can everybody see what it is saying? So what Manas is replying, okay, I can help you with that. I'll start researching attractions in Delhi to create a 2-3 days itinerary. Then I will build a detailed website. Detailed website it is saying, है ना? ऐसा नहीं कि एक इंटरैक्टिव वेबसाइट नहीं होगी, कोई वेग सी वेबसाइट होगी जिसमें 4-5 लाइंस लिखी होंगी। आप लोग इसका आउटपुट भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ, द काइंड ऑफ आउटपुट इट गिव्स। तो अभी कोई आपको कहता है ना, कैन यू मेक वेबसाइट, सो यू शुड से यस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन मेक अ वेबसाइट। All right, jokes apart, let's come on to the back of this technical topic. So it is saying that research top attractions in Delhi. So इसका मतलब, इसके आगे एक टिक दिख रहा होगा आपको ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि what it is doing, आप स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को समझ सकते हो। दैट सबसे पहले रिसर्च टॉप अट्रैक्शंस इन दिल्ली टू बिगिन प्लानिंग द आइटिनरी, है ना? टॉप अट्रैक्शंस को इसने सर्च किया, इन्होंने फाइल क्रिएट किया, फिर सर्च किया, फिर फाइल क्रिएट किया, फिर सर्च किया, फिर ब्राउज किया। जब तक इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल गए, इसने वेट किया, ठीक है। इसके बाद मैनस ने कहा, आई सी दैट वी आर एनकाउंटरिंग सम वेरिफिकेशनल चैलेंजेस विथ ट्रिप एडवाइजर। अभी वाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इधर पे वो स्टक नहीं हुआ, उसने इसको होल्ड नहीं किया कि इसने बोला हो कि वहां पे इस काम को स्टॉप कर दिया हो और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का इन्वॉल्वमेंट हो। इसने देखा कि इनको कुछ वेरिफिकेशन चैलेंजेस आ रहे हैं विद ट्रिप एडवाइजर, इट immediately change the platform from TripAdvisor to some other platform. From some other platform, it started browsing from Lonely Planet, as I can see. ठीक है, so in this way इन्होंने और फिर आगे किया। फिर इसके बाद designed a balanced 3 days itinerary based on the researched attractions. जो भी रिसर्च हुई है उसके बेसिस पे, जो भी अट्रैक्शंस इनको मिले उसके बेसिस पे, इट हैड डिजाइंड द 3 days itinerary. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क, मैंने अपने प्रॉम्प्ट में क्लियर मेंशन किया था, आई वांट वेबसाइट, crystal clear website I need. It should be in working condition with all the codes should be proper. There should be no flaw in that. It should be flawless and seamless website. ठीक है, तो इसके बाद create website structure and content for the itinerary. Then it started creating a website structure and the content for this. ठीक है, तो इसके बाद इसने एक static website using React template, इसने खुद से ही अपना टेम्पलेट सिलेक्ट किया, ये बीच में नहीं रुका, just to say that it could have stopped human intervention के लिए बोलता कि आप इसमें से सिलेक्ट कर लो फॉर्मेट. It has never done that. It has selected the format which suited best for it him. ठीक है,
इसके बाद एक टेम्पलेट यूज करके प्रॉपर इसने सारी चीजों को किया, एंड अल्टीमेटली मैनस ने मुझे, आई हैव कंप्लीटेड योर दिल्ली ट्रिप आइटिनरी एंड वेबसाइट, ठीक है, इसने मुझे इन्फॉर्म किया दैट इसने वेबसाइट बना लिया है और आइटिनरी भी कंप्लीट कर लिया है, अ 3 days आइटिनरी दैट कवर्स ऑल द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ दिल्ली विद अ डिटेल्ड डे बाय डे प्लान एंड ट्रांसपोर्टेशन टिप्स। इसके अंदर डे बाय डे प्लान्स हैं, इसके अंदर प्रॉपर टिप्स हैं, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। सो जस्ट होल्ड योर सीट बेल्ट्स, मैं जस्ट आपका इसको वेबसाइट आपको दिखाने वाला हूं। एंड अल्टीमेटली इसने मुझे 2 फाइल्स, एक जिप, एक आइटिनरी इट्स इन द वर्ड फॉर्मेट, और एक जिप 5.4 MBs, इसने प्रॉपर वेबसाइट मुझे बना के दिया, ठीक है। तो अभी लेट मी ओपन दिस वेबसाइट, व्हाट इज इट सेइंग, दिस इज द वेबसाइट, सी व्हाट एन अमेजिंग वेबसाइट, डिस्कवर दिल्ली। क्या मैंने अपने प्रॉम्प्ट में लिखा था दैट discover Delhi should be the cover page of the website? The answer is no. I have just written I need 3 days itinerary. और अभी just imagine करो, any place I am going, I have the complete website, ठीक है, a 3 days journey through India's captivating capital. See the kind of words it is using, ठीक है, wow, I have not said to the AI that you should not told AI to show that write a detailed information about Delhi. It is writing that Delhi is both a union territory within India as well as a city and features two different worlds, New Delhi and Old Delhi. Wow, amazing. See the kind of language, the flawless language, and the kind of website it has made for me. Oh my God, the kind of, the photo patterns, India Gate and Tomb, these things are there, Qutub Minar, Lotus Temple, everything, 3 days itinerary. It is also mentioning day one, what could be done. Oh, let me open this website again. See, this is the complete website. So ये सारे फोटोज इसने डाल के दिए, ठीक है। इसके बाद डे 1, डे 2, डे 3 सारे प्लान्स भी लिख के दिए, डे 1 ओल्ड दिल्ली एंड हिस्टोरिकल ट्रेजर्स विथ टाइमलाइन दे हैव गिवन, 8 से 9 आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है, 9:30 to 11:30 क्या करना है, 11:45 to 1 o'clock क्या करना है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कैन बी एक्सप्लोर्ड ड्यूरिंग द आफ्टरनून्स, इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में यू कैन गो टू कनॉट प्लेस, 7:30 से 9 बजे तक क्या कर सकते फॉर ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन क्यूजीन, ट्राई यूनाइटेड कॉफी हाउस, सरवाना भवन फॉर साउथ इंडियन डिशेस। जस्ट इमेजिन, is this the prompt which I gave? The answer is no. This is the kamal, this is the amazing thing of the agentic AI. They are even mentioning that take a see this transportation tip, you can see, take a Delhi metro to Chandni Chowk station and then either walk 15 minutes. See the kind of depth which this website has. They have even mentioned all the top attractions, Red Fort, Humayun's Tomb, Qutub Minar, Lotus Temple, India Gate, Jama Masjid. All the practical information is even covered in this. So practical information, Delhi metro, rickshaw, cycles, taxis. See the last point, bargaining. Expect to bargain in the market, but not in the fixed price shop. So this kind of tips, practical information they are giving. So just imagine the kind of a tool this Manas AI is. So just write down in the homework list. You should always, you should just try to explore this app and this AI agent and try to accomplish the task. So let's move further. Abhi, after, so don't you think that after using such kind of tools, we can, have amazing results, amazing results. आगे बढ़ते हैं. Hope this, hope you all are enjoying this session. है ना, होप आप लोग मजा कर रहे होगे इस सेशन में. काफी नई चीजें हमें सोच के जाना है. सो आफ्टर दिस मैनस एआई वी आर जस्ट मूविंग अहेड. आप लोग को बड़े फिनोमिनल एक और टूल के बारे में आप लोगों को बताता हूँ. टाइम इज द कॉन्स्टेंट. देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कवर्ड टुडे एंड टाइम इज अगेन अ कॉन्स्टेंट. तो मैं आगे बढ़ता हूँ एक बार, आप लोगों को regarding
from your notebook LM. And now I upload. Can you know what is notebook LM? It is very prominent. It's been introduced about 1.5 years back, and just to incorporate, last month 20th, that is on 20th of May 2025, they have came up with the application, the app, mobile app, that is iOS as well as Android. Both the applications they have introduced last month on 20th. Let's have a hands-on experience with Manas AI, with Notebook LM. Let's see what is Notebook LM. एक फ्री टूल है, गूगल का टूल है, आप समझ सकते हो गूगल का है, इसका मतलब जबरदस्त होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें हम लोग देखते हैं। आप इमेजिन करो, मैं आप लोगों को बोलता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था कि हम लोग देखते हैं कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो मच बिजी, दे कम अप विद समराइज्ड फॉर्मेट ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग, 500 पेज को समराइज करके 10 बुलेट पॉइंट्स में इमीडिएटली, जैसे ही ब्लूप्रिंट रिसीव होता है अपडेट्स का, उसके विद इन 5 minutes दे कम अप विद दिस 10 बुलेट पॉइंटर्स. So do you think that they are reading those odd 500 pages? The answer is no. They're using the tools like Notebook LM. ऐसे टूल्स को यूज करके हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है. अगले 5 मिनट में यू विल बी लाइक वेरी वेल वर्स्ड विद दिस. दिस इज एन अमेजिंग टूल, वेरी सिंपल, वेरी गुड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेरी हैंडी, एंड द फिनोमिनल रिजल्ट्स आप लोग देखेंगे तो. ठीक है, सबसे पहले मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप लोगों को इमेजिन कराता हूं. मी, आई एम प्रैक्टिसिंग इन मध्य प्रदेश. I have one, for example, I have a client based out at, Maharashtra. So RERA is basically state-driven act. You know, just take an example. Those who are not related to RERA, but just take an example. It is state-driven act, and MP RERA will be different from Maharashtra RERA. Maharashtra RERA will be different from Gujarat RERA. There are certain common grounds, but still certain things which are different. So I have this data available about RERA. मेरे को कोई मेरा क्लाइंट कॉल करता है, सर आप मेरा एमपी रेरा कर रहे हो, मेरा नया प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने वाला है और एक नया प्रोजेक्ट गुजरात में भी आने वाला है. आपको उन दोनों प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन मुझे करने हैं. सर आप मुझे प्लीज बताएंगे क्या कि महाराष्ट्र रेरा और मध्य प्रदेश रेरा में क्या डिफरेंसेस है? ठीक है, so what do you think if you are practicing in this field and the client is asking you this question? So do you think that we will go and read this 2000 pages and within 5 minutes you will come up with the results? Answer is, but this is possible by using notebook LM. 5 minutes, yes, 5 minutes. ठीक है, इतनी अमेजिंग चीज हम लोग अभी प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, what you need to do is you just need to open Google and you need to write down notebooklm.google.com. notebooklm.google.com. You will go into notebooklm.google.com. You will find this. This app is opening. Understand anything. Okay? Your research and thinking partner grounded in the information you trust, built with latest Gemini models. Okay? And the option is try notebook LM. So I'm just clicking on try notebook LM. ठीक है, ये notebook LM open हो गया. ठीक है, इसमें क्या है कि वी हैव सोर्सेस थिंग, हम लोग बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से डेटा को ऐड कर सकते हैं. लेट मी क्लिक ऑन ऐड, जस्ट सी दिस. हम इसमें अपलोड कर सकते हैं सोर्सेस. फॉर एग्जांपल हमारे गूगल ड्राइव में कोई बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है, 2-5 हजार पेजेस का रह मध्य प्रदेश का, 2-5 हजार पेजेस का रह महाराष्ट्र एंड गुजरात का. वी कैन इंक्लूड दैट हियर. नेक्स्ट इज हम लोग बहुत सारे वेबसाइट के लिंक्स दे सकते हैं. रेरा महाराष्ट्र की वेबसाइट अलग है, रेरा गुजरात की वेबसाइट अलग है, रेरा एमपी की वेबसाइट अलग है. हम सारी लिंक्स इसमें डाल सकते हैं. ठीक है, प्लस बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आर अवेलेबल विच आर, सम वीडियोस आर रियली गुड बाय सम यूट्यूबर्स, उनको भी हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं यूजिंग दिस लिंक. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है इन एनी फॉर्मेट, मे बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट, हम उसको भी पेस्ट कर देते हैं. इन सारी इंफॉर्मेशंस को हम उठा के इंपोर्ट कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास पीडीएफ से डेटा आ गया, हमारे पास यूट्यूब लिंक से डेटा आ गया, हमारे पास वेबसाइट से लिंक आ गया, हमारे पास डॉक्स पीडीएफ आ गए, हमारे पास गूगल ड्राइव से डेटा आ गया, हमारे पास ये सोर्सेस को हमने डिफाइन कर दिया. व्हाई? द रीजन इज there is a concept called hallucination. Hallucination means that अगर हमारे पास हम चैट जीपीटी से पूछते हैं तो एट टाइम्स सर्टेन गलत और सर्टेन वेग रिजल्ट्स भी हमें मिलते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्लीज गिव मी अ फोटो ऑफ बेयर. ठीक है, तो बेयर को क्या समझेगा? देयर इज एन एनिमल, दैट्स बियर, एंड द अदर वन बियर इज द थिंग विच पीपल ड्रिंक. तो इफ
our objective is to give the animals photograph. Our objective is to fetch animals photograph, and that is giving drinking beers photograph. It means that this is hallucination. So likewise, हमने इधर sources को define कर दिया. In notebook LM, it will not go outside the sources. It will be working within the sources. जो भी हमने जितने भी रेरा एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात के पीडीएफ, वेबसाइट, गूगल डॉक्स, सारी चीजों को हमने लिंक कर दिया. ठीक है, उसके बेसिस पर ये डेटा को एनालाइज करेगा. आगे बढ़ते हैं, इसकी मजे की चीजें दिखाता हूं. एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स it will generate the mind maps. So I've just clicked on the mind map thing. So this kind of mind maps can be created. Just see. Do you think that this kind of interactive with amazing graphical user interface, इन चीजों से हमारी लर्निंग कैसे 10x मोड पे जा सकती है? जस्ट सी रेरा एमपी रूल्स. ठीक है, इसके अलग अलग जनरल प्रोविजंस, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन. अब हमें रजिस्ट्रेशन के बारे में पता करना है, सो वी आर क्लिकिंग ऑन दिस रजिस्ट्रेशन थिंग. ये हमने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया. सो इट इज अगेन टेकिंग अस टू द सोर्स. ठीक है, सो इट इज अगेन टेकिंग अस टू द सोर्स थिंग. So these are the mind map. So just imagine आप इतने करिए कि अगर अगला जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है और 500-600 ऑड पेजेस आते हैं, वी इनकॉर्पोरेट दिस in notebook LM, we can get such mind maps and we can share these mind maps with the clients just to portray that client is aware कि अरे भाई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा सुपर अपडेटेड रहते हैं. ठीक है, and we don't need any PR team for this, we don't need any social media marketing team for this can easily be done in simplest of the simple manner. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. इसका एक और अमेजिंग फीचर बताता हूं. इट कैन summarize this complete data. Let me close this. It can summarize this complete data in very simplest way. Can you see this summarization? इतने सारे sources, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, सारे रहरास को हमने ले लिया. इतने वेबसाइट, गूगल डॉक्स, 5000 पेजेस ले लिए, उन सबको इसने समराइज करके बिल्कुल छोटा सा एक पैराग्राफ में दिया, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट चीज इसके अंदर है. वी कैन इवन ऐड नोट्स इन दिस. कैन यू सी दीज नंबर्स जस्ट टू? सो दीज आर एक्चुअली द सोर्सेज. ये सोर्सेज हैं. ये कहां से, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इट विल लीड अस टू द सोर्सेज. तो वी कैन फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल, फॉर्म ई इज एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. सो इट विल टेक अस टू दैट फॉर्म एंड वी कैन अगेन फर्दर सी. ठीक है, इसका एक और जबरदस्त चीज जो मैं बताने वाला हूं, ये प्रॉपर रेफरेंसेस हो गया है ना. इसके अंदर ये सारे रेस्पॉन्सेस को वी कैन सेव. तो एक जिस्ट हमें मिल गया, समराइज कर लिया हमने उस डॉक्यूमेंट को. वी कैन शेयर दिस समरी विद द क्लाइंट्स. ठीक है, इसके बाद इसमें एक और अमेजिंग फीचर है एंड दैट फीचर इज रिगार्डिंग ऑडियो ओवरव्यू. हम जब ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो कैन यू इमेजिन दैट देयर विल बी अ प्रॉपर पॉडकास्ट विच विल बी क्रिएटेड. प्रॉपर पॉडकास्ट कि जिसमें दो लोग, दो एआई आपस में बात कर रहे हैं, and one is telling about the registration procedure, the other AI is telling you about you know some other pros and cons of this thing. ठीक है, let me show you this practically. आपके सामने I just clicked on this interaction. See. Welcome to the Deep Dive. Today we're tackling a really important piece of the puzzle if you're involved in property in Madhya Pradesh. We're looking at the Madhya Pradesh Real And Estate we can Regulation even and Development intervene in Rules from between. 2017. In this Exactly. These discussion, we can MP intervene RERA in rules, between. they're There's an basically the option to detailed join. roadmap for Just see, I'll how the just do main this. RERA Act gets applied, on the ground in the state. Right. Our goal here is really to cut through some... Oh, wait, someone wants to join. Hey, go for it. Uh, Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it.
Imagine a factory running 24/7, machines assembling products in complete darkness without a single human worker in sight. This isn't science fiction. This is the rise of China's dark factories, a new era of AI-powered automation that is reshaping manufacturing and eliminating human labor at an unprecedented scale. Dark factories, also known as lights-out manufacturing, are fully automated production facilities that require little to no human intervention. These factories operate in the dark because robots don't need light to work. They function tirelessly. Manufacturing Hub is spearheading this movement. The Chinese government has been aggressively investing in AI, robotics, and industrial automation to boost efficiency, reduce labor costs, and remain competitive in global production. With a growing labor shortage and rising wages, automation has become the ultimate solution. At the core of dark factories is artificial intelligence. AI-powered machines can analyze data, optimize production lines, and even perform self-maintenance. Robotics, equipped with machine learning, are capable of assembling intricate electronic components, manufacturing vehicles, and packaging goods at a rate no human team could sustain. But as factories evolve, the question arises: what happens to human workers? In many Chinese cities, factories that once employed thousands are now being replaced by AI-driven automation. Jobs in manufacturing are disappearing, shifting towards machine maintenance, software engineering, and logistics management. While AI automation increases productivity and lowers costs, it also raises concerns about mass unemployment and the ethical implications of a workforce driven by machines. Will humans be left behind, or will new industries emerge to accommodate this shift? China isn't alone in this automation race. Countries like Japan, Germany, and the United States are rapidly developing their own smart factories.